I'm good. How many? I mean, I know you're very busy. So, how many consultations did you reschedule? Today I just finished two of them, but not really that very busy also. I'm not unable to organize. I'm very clumsy, not like you. You can do it there just like that in fingertips. All your organization is on fingertips. I'm not like that. Very clumsy, and so I can't manage it. I think the only thing is that, so I have a habit of setting up a structure first. Yes. Yeah, I don't have that. Set up your structure. Correct. That's what I'm talking about. You are very structured, very organized, and very impulsive too in that way, like positively impulsive. I can't do that. My brain doesn't work that quick like yours. So I have a very analytical and organized brain when it comes to living my day-to-day life. Mm-hmm. I'm very clumsy, very clumsy. So it's very slow. I'm very slow. I take my time to learn also. So it's all going. That's okay. I think taking your time to learn is fine. It's only, I personally believe that whenever we have a set outline for our professional sphere, it helps us move forward with a lot of confidence. Yeah. Wonderful. Yes. I'm seeing you. I'm taking lessons one by one. I mean, one at a time. I mean, I've been so old now. I mean, with this practice, it takes a few things to unlearn also. So taking my time again. And you have support system. I don't have. My husband, I I feel. am your support system. Use me. I will become a support system. Thanks so much, ma'am. Yeah. You're welcome. Whenever you need support, reach out. Sure, ma'am. I would. Yeah. Thank you so much. Yes, Shashi ji, you wanted to say something. You unmuted yourself. What? And then you muted yourself. What were you saying? No, I just wanted to say hi to you and thank you. And I'm missing the sessions, missing seeing you. I'm missing you too. आदत हो गई है ना, मोक्ष पाठ के बाद आदत हो जाती है. Yeah, कल तो ऐसे था कुछ भी काम नहीं है करने को. लत लग जाती है. Especially after the assessment, it was like exam board के exams खत्म होते थे तो अब क्या करना है समझ नहीं आता. But yeah, nice 2 months we had with each other. Lovely. Thank you. And we are meeting on 27th. Yes, sure. So we are meeting any which ways we are meeting. Yeah. Looking forward. Yeah. Looking forward to seeing you. रूपा जी, सॉरी रूपा जी. हाय रश्मि जी. बोल रही थी मैं तो बेधड़क उसको फोन कर लेती हूँ या मैसेज डाल देती हूँ कि श्वेता प्लीज कॉन्टैक्ट मी. And she calls me back. Either I call her back or she calls me back. No, Shweta ma'am herself is so busy. We see her running around. I mean, she does it everything herself. And one more will be added on. But yes, no, I will reach out to her for anything. Please do that. I am always there. And I'll tell you, for everybody who is struggling with scheduling, please use spreadsheets. Always use spreadsheets. See, this is not it is our in-house orientation, which means bahar wale koi nahi, sab hum hi log hain. So I will also take any problems or anything that anybody is stuck with. So jo usme hum support de sakte hain. Screen dekh rahe ho? Can you see my screen? Dr. Rupa and all the other professionals in the field. Do you see, before the month has started, abhi to November chal raha hai, this kind of a schedule was made already in the month of October before Diwali. Oh. Okay. What is the purpose? The purpose is not कि अगर इसको भर दिया तो I can't change it. But the purpose is to schedule myself in such a way कि मुझे ये पता है कि मुझे क्या target के साथ focus करना है. So this is already made for the entire year till December. Now I work with 4 time slots most of the time. तो मेरे चारों time slot उस पे mentioned है. ये देखिए 9 to 12, 1 to 2, 3:30 to 5:30 and 7:30 to 8:30 or whatever. So now tweaks will happen. कभी 7 to 9:30 हो जाएगा, कभी 9:10 to 11 हो जाएगा, 10 to 12 हो जाएगा. ये छोटे-छोटे tweak करने होते हैं. अब Google Drive पे इसको create करने का फायदा क्या है? No matter where you are, your phone, your laptop will always be accessible. In a second, you know where you're going.
This is very beneficial for each one of you because इससे क्या होता है, आप लोगों को clarity रहती है आपके पास कब time है. अब जैसे suppose somebody calls me and somebody says कि आपको ये session लेना, जब आज का दिन लेते हैं. Today is Friday. Now I have De-Clutter and then I have a 7 to 9 class. I am free in the afternoon. That means anybody who calls me up कि भाई मेरे को one-on-one करना है, I can schedule it here and add their time. Yes. So my staff tells me we need support. I know when I have time. So 24 hours will always remain 24 hours. Most of the time the confusion is not 24 घंटा. The confusion is हम कहाँ कब busy हैं. हमको ये याद नहीं रहता. We are always scared of double scheduling ourselves, over scheduling, under scheduling. We don't know how to manage. But with such a system, life is bang on easy. Now, today I know that next week I have to give power of no का manual. तो power of no का manual मेरे पास Sunday ready होना चाहिए. ठीक है. अब मुझे ये पता है कि December I'm not launching anything new. But in January, I'll be launching. What am I doing? So I'm doing Ho'oponopono. I'm doing my nothing naya, but I will be February. I'm launching tarot spells. So I'm preparing automatically. ये मेरा guideline है. इसमें Yes, मुझे this is so basic and so simple. So I mean, anybody can do it and anybody can understand it. Anybody can understand it. अब क्या है Republic Day holiday marked? Nobody, no class on Republic Day. On Republic Day. ठीक है. इसको करने से आपको have there are three things. One, you know your day-to-day availability, your day-to-day timings. As most of us are women, we always need to schedule घर का काम बीच में. Children, partners, kitchens, groceries, ये वो. इससे आपको पता चल गया कितना टाइम कहाँ पर है. You will tweak yourself. अच्छा मेरे पास इतना टाइम है ना, कर लिया. Done, finished, over with. Second, you know which weeks you are already busy, so social obligations can be taken and managed accordingly. Correct. Third, you know 3 महीने बाद मुझे क्या create करना है, तो आप कुछ भी create नहीं करोगे, आप उसी पे focus करोगे जो आपको पहले deliver करना है. Whether you are a professional or whether you are a housewife, this kind of a scheduler should be in front of you. बच्चे कितने बजे pick होने हैं, आप अपने हिसाब से करोगे ना, day wise. आपकी kitty कितने बजे कब है, what are the days you have to go out for a wedding. So अभी इसमें I don't have to go, otherwise see like I have my sound therapy training, so my sound therapy dates are already marked. No double scheduling anywhere. और इससे ज़्यादा simple system नहीं मिलेगा आपको. This really very structured. Shweta, sorry, please can you repeat again in short? I got one call. Sorry. Please watch the recording. Thank you. Please watch the recording because पिछले 13 minutes से मैं यही बता रही हूँ. I will not be able to. There's nothing to repeat here. It's only ongoing. Yeah. So, can you do this, Dr. Rupa? Yes, ma'am. I'll definitely try doing this. So now I'll tell you what you have to do is open a new spread. 1 minute. You will go to your drive. You will click on new. Open a blank spreadsheet, just a blank spreadsheet. ठीक है? अब क्या करोगे? First थोड़ा सा effort हमको डालना है. हमने यहाँ पे January, February हमें क्या देना है? We will write down the dates. So suppose so how many days in a month? Days 30, 31. 31 होते हैं and 7 days in a week. तो Sunday, मुझे Sunday देखना पसंद है तो मैं Sunday पहले Monday, or otherwise the other option is what you do is you go here and you feed in a date, any date. So suppose you're feeding 01/01/2023. ठीक है? अब इसको जब करोगे देखो कैलेंडर आ गया अपने आप. हाँ, अब first only the मेहनत has to be done, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करनी पड़ती. यहाँ मैंने इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 click 2, click 3, no repetition, no writing. ठीक है? Yes. 4, 5, 6, 7.
Up first was which day for me? First is a Sunday, which we have already started with. So we are lucky and blessed. हमें rewrite नहीं करना पड़ेगा. Tuesday, Wednesday. Spellings अपने हिसाब से please change कर लेना. मैं गड़बड़ हो सकती हूँ यार. This is just a sample. Yeah. And Saturday. Okay. अब इसको because I am a kid of formatting, so I shall bring it all together because I cannot live without my formattings. अब हमें each one of us has timelines. तो हम क्या करेंगे? हर कॉलम के साथ के पहले बीच में एक कॉलम ऐड कर देंगे. यहाँ आएगा आपका टाइम. Now suppose my schedule starts at 7 a.m. So I put in 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1, 1 to 3, depending on whatever your schedule goes. Yeah, don't follow this. Up 7 to 9, school duty. ठीक है, breakfast duty. Yes. फिर consultation 1. ठीक है. Later you can add किसका आपको क्या करना है. Ma'am, really, I should tell you, your brain works so organized. I think you're born with that organized brain. I was born in a family which was very organized. I had no but to fit in. And it's just the opposite here. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और क्लियर करेंगे. January 2023, so that at a glance I know where I am stuck. I will make it into red, bold it, and increase the size. हो गया? इसको यहाँ से कॉपी करूंगी मैं, यहाँ उठा के इसको नीचे पेस्ट करूंगी, फिर यहाँ क्लिक करूंगी और 8 से चालू कर दूंगी चेंजेस करना. See how easy this is? This is how you declutter your day. So the first tool of today, declutter your day. Wow. Very good start. Yes. Right. अब एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, इसको हम यहाँ कर देते हैं to be deleted, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मुझे क्या चाहिए. So ever you will create. We wouldn't have done that, ma'am. See, you're so, I mean, you know what to do. It's not that I know, Dr. Rupa. I have also acquired because I've seen one thing. When we have too many things on our desktop, when we have too many things on our Google Drive in a folder, we'll always get confused. वो क्यों है? कुछ चीज हमको नहीं चाहिए, उसको हमें delete करना है. So once a month, take out 1 day, 2 or 3 hours. उस 2-3 घंटा में क्या करना है? You will go through all your phones. You will go through all your laptops, your systems, your Google Drives. Delete what is not necessary. This is a way of decluttering your mind, not just your space, not just saving space. दिमाग खाली होता है. जिंदगी में declutter करना मतलब see, decluttering is a word which we often use, no? Clutter हो रहा है, we want to declutter. Clutter हो रहा है, ये करना है, खाली करना है, बहुत सामान रखने की जगह नहीं है. It is not that space nahi hai. Whether it's your home, it's your cupboards, it's your mind, it's your emotions, or your body. It's not that we don't have space. We have enough space. We just don't know how to use it and organize it. Yes. And often ना हम ये सोचते हैं बाद में ये काम आ जाएगा, रख लेते हैं. वो बाद में कभी काम नहीं आता. Hoarding. The same way we hoard products and we hoard shampoos and old clothes and sentimental value things that we've gotten around the years. Like the first rose my husband gave me, a dried rose, or a first card that I got, or my son's drawings and sketches and whatever. First drawing. We always end up holding and hoarding our emotions. We always end up hoarding our thoughts. We always end up hoarding our feelings, our beliefs, as if uske aage kuch nahi hai. So the first rule of life has to be कि declutter करना है ना, तो 5 aspects पे करना पड़ेगा एक साथ. Since we are talking decluttering, understand one thing: you can't just declutter your brain and not declutter your life, or you can't just declutter your brain and not let go of your emotions. 5 spaces need to be decluttered at the same time, at the same place, in the same moment. And what are those 5 aspects?
What are those 5 aspects that need to be decluttered? नोट्स लिखने वालों आगे ऊपर मुंह पर देखकर डिस्कस भी कर लो थोड़ा, फिर नोट्स लिख लेना, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग. नोट्स मत लिखो, अभी मेरे से बात करो, टॉक टू मी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस इज okay, it's an orientation, but so what? We have to take back something. What are we going to take back from this session? We are not taking back a payment link from this session. We are not taking back a schedule that will come to us in January. We are going to take back something that is going to help us create and manifest what we want to, with clarity and lack of confusion in life. So once again, what are the 5 areas that need to be decluttered together? Come on, unmute everybody. Mental and emotional. Mental, emotional. What else? फिजिकल Physical matlab? यानी बॉडी के लिए Physical Whatever body. So let's specify it as physical body. ठीक है? Material. Material matlab? Material जैसे घर का सामान भी हो या anything materialistic. Space. Place Objects. decluttering. Very good. Home, objects, All space. the emotional issues. फाइनेंशियल इश्यूज लाइक Finances को declutter नहीं कर सकते, वो already decluttered होता है, उसको तो हमें clutter करना होता है. अच्छा People around us. Relationships, excellent. जिसने भी बोला, very good. And एक और area, चलो 5 Emotional egos. ऊपर आ गया emotional. देखो screen share check करो क्या लिखा हुआ है. एक area रह गया, बहुत important. Spiritual. Excellent. अब मुझे एक बात ये बताओ, clutter का मतलब क्या होता है? Chaos. Unmanaged. But okay, so clutter is unmanaged, अनऑर्गेनाइज्ड एक्चुअली things that are not required. लेट गो that is not clutter. Letting go is never clutter. Not having things in proper places. खाली करना. Not. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, किसने बोला खाली करना? कौन था, नाम बोलो. श्रेया. श्रेया, क्वेश्चन क्या था? declutter क्वेश्चन था या clutter क्वेश्चन था? क्वेश्चन इज व्हाट इज clutter? कान खाली करना. Holding back. Not having things, not having space or a proper space for a thing. और क्या होता है? Holding Having back an of things. excess. होल्डिंग बैक और possessions, obsessive possession कर देते हैं. चलो थोड़ा हम strict terms में ले लेते हैं. Hoarding, obsessive possession equivalent to hoarding. And why do I put it as obsessive possessions here? Because the feeling is We can't let go of it easily. we can't let go of easily. हाँ. अच्छा, clutter और क्या होता है? Unmanaged हो गया, non-required things हो गया, और क्या होता है बताओ मुझे. माइंड चैटरिंग No, this is, we are not talking about Unregulated, specifics. like emotions. Unregulated. So, एक minute. We are not talking what is mental clutter and अच्छा, emotional. okay. Question is what is clutter? देखो अब एक चीज लिखो, श्रेया and ये कौन है? ये वंदना and रश्मि. Question क्या था? और किधर से आ रहे हो? Emotions, mental chatter. एक चीज देखो, आपके माइंड में कितना कुछ है which is not letting you absorb what is coming to you without a filter of what exists. And ये सिर्फ 3 जनों के साथ नहीं, 3 जनों ने आंसर दिया इसलिए उनके नाम बेचारों के आ गए. So be thankful to them that we are learning something new. That's okay. However, Happy to help. it is there for each one of us. तो मेरी यहाँ पे मेरी टीम से अंजलि है, ठीक है. अभी मैं अंजलि को भी यही समझा के आ रही थी, इधर खाली करो, ऊपर से जो तुम्हें आता है, जो तुम्हें पता है, जो तुमने सुना है, उसको खाली करो. बिकॉज जब तक ये खाली नहीं करोगी तब तक उसमें तुम कुछ नया नहीं डाल सकती हो. कबर्ड साफ करने के लिए भी कबर्ड खाली करनी पड़ती है, हाँ कि ना? But will that happen? Yes. ma'am? Can we खाली our mind? Yes. You can, Dr. Rupa. But what I've, I mean, for few days, I mean, past few days, I'm having total amnesia of selective things. Very So good. that's very Enjoy bad. I mean, No, it is not.
It is a sign for you, Dr. Rupa, that your brain needs to be reorganized. Okay. Okay, I'll tell you why. एक time आया था मेरी life में. This is about COVID का like COVID second COVID lockdown के बाद. I would say something and go out of my room and I would forget it. My memory, my retention of thoughts and memories was not more than 5 minutes. And my son would come and tell me, Mama, आप मेरे को ये दे रहे थे. Pranav would tell me, तुम ये कहाँ हुआ? You had gone to do this. Where is it? I'm like, oh, I forgot. That time I realized why was it happening? Because there was too much confusion. ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. वो overlapping confusion में brain function नहीं कर पा रहा था. Brain was giving me a sign, boss, stop. देखो करना क्या, तो पहले ये identify कर ले, क्योंकि इस level पे हो सकता. So what you have to do at that point of time is start maintaining a small diary or a notepad, and instead of using a meeting, 1 minute, 1 minute. Let me just. Can you mute yourself, please? Guys, ये और भी किसी के बैकग्राउंड से ठोकरें आ रही हैं, अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखना अगर नॉइज हो. If noise is not there, it's okay for you to be unmuted. So keep a diary or keep a flap वाला कवर. देखा है फ्लिप कवर जिसके एक ऊपर से फ्लैप आता है. आजकल फ्लैप में पॉकेट्स होती हैं. It comes with slits and pockets. Get a flap वाला cover which can hold a छोटा सा notepad or a piece of paper. Start writing down what comes. If you are mobile addict like me, जिसका काम जिंदगी में मोबाइल के बिना नहीं हो सकता, because 12 घंटे तो Zoom भी मोबाइल पे ही चलता है, तो आपके लिए your laptop should have a sticky note open or keep on WhatsApping yourself. मैं अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पे WhatsApp करती रहती हूँ. अपने ऑफिस नंबर से, वर्क नंबर से, पर्सनल नंबर या पर्सनल नंबर से वर्क नंबर. माय टू डू लिस्ट, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. The minute it is on paper, my brain starts becoming empty because I don't have to remember it. So my brain will stop giving me a game. अब होता क्या था? I would go to get a glass of water and kitchen में जाके आता है, ओहो बर्तन भी करने हैं, ओहो ये भी करना है, वो एक ग्लास पानी रह जाएगा, बाकी सब हो जाएगा. It is nothing. And you know why does this happen? What is the culprit behind this? Multitasking. It only happens because we try to multitask. Our brain cannot focus. Wherever the brain will find 4 or 5 paths to work at the same moment, it will defocus. Defocus hote hi, you will not be able to retain what you're thinking because there will be 5 or 6 overlapping areas which are currently active. वो भूल जाएगा. And as Dr. Rupa said, it will create selective amnesia in your life. तो अगर selective amnesia नहीं चाहिए, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है. Have this to-do list with you all the time. And you know what will happen is, like, I know for a fact I'm bad at scheduling myself, very bad. तो मेरा scheduling क्या होता है? अगर मैं ये सोचूंगी 5:30 मॉर्निंग में उठूंगी ना, तो 5:30 अलार्म तो बज जाता है. अपने आप को बिस्तर से बाहर निकालने में मुझे half an hour चाहिए. It takes me that much of time to wake up. For me, early mornings at times, especially as a routine, is a little difficult to digest. That is not my hardware. ठीक है, अब मैं सॉफ्टवेयर तो चेंज कर सकती हूँ, मैं हार्डवेयर चेंज नहीं कर सकती ना. अपना बॉडी का हार्डवेयर कैसे चेंज करूंगी मैं? सॉफ्टवेयर तो चेंज कर लूंगी. सॉफ्टवेयर will change with beliefs, will our own, you know, perspectives, perceptions. But how do I change my brain? I can't change my physical brain. So what I have started doing is I have started scheduling myself 30 minutes prior to when I need to wake up. तो रोते पिटते मैं उस वक्त पहुंच जाती हूँ किचन में when I need to be in the kitchen at 5 a.m. in the morning every day. So what you have to do is you have to understand yourself. You have to identify what is the core cause of problem. You have to realize the fact कि उस problem में से root क्या है और symptom क्या है. And then you need to let go or heal the root cause, not the symptom. Symptom पे काम करने से एक pain killer खा लिया और वो pain दब गया, but the pain still exists in the body. That is not going to be a long lasting effect.
Now, for those of you who are thinking, how does all of this tie up in declutter? Let me tell you, every word from the good morning till now is indirectly or directly tied up with clutter and declutter. एक शब्द, एक idea, एक step will help you declutter or understand your clutter at some point of time in some area of your life. How many of you, I'm going to close the screen share for 2 minutes. How many of you feel कि you know my life में बहुत clutter, मतलब I can't manage my time management नहीं है? Raise your hands. Dr. Rupa, Kajal, Vandana, Shashiji, Chinmay, Niharika, Nidaji, good. Poonam, where are you? I can't see your background today. I love seeing the trees behind you. So she's in, her husband is in the defense, and हमेशा you'll see good greenery behind her. Oh, आप कहाँ पे वहाँ आ गए ना पेड़ पौधे पीछे सारे. पूनम चौधरी also, अपने आप को भी अपना कैमरा ऑन करो. आपका भी बैकग्राउंड हमेशा एकदम हरा भरा होता है, green and fresh. It's a nice break to the eyes. So understand this. Why can you not manage your time? What is the biggest thing? What is the biggest problem that each one of you faces in managing time? Vandana, क्या होता है जब time management में problem क्या होता है? Mostly I get stuck in one thing and I keep doing that and I remember something else and I go to that. It's like I cannot keep up. आधा काम कभी छोड़ देती हूँ and then I remember something else. It's like there's something or the other always pulling me. Distractions. Okay. Kajal, आप कहाँ फंसते हो time management में? Confusion. Confusion. कौन सा पहले करूँ? कौन सा बाद में करूँ? With what needs to be done now? Excellent. Dr. Rupa, where do you get stuck? Mine is with managing the duration of the time. I may take it. Of the time. Yeah. I always extend it and I am already late for the next one. It's like that. I totally understand you. It used to happen with me. अब मैं आजकल अपने आप को खींचने लग गई हूँ. I have started being very conscious about ensuring that I end up within the bifurcated time that I have left for myself. Even I keep that extra half an hour space also. Sometimes it extends and I'm already in a mess. It's like that. Always happens like that. Okay. So Chinmay, where do you get stuck? Unmute, Chinmay. I have no idea what you're saying. You're not audible. Is it right? No, you're not audible. Dr. Rupa, is she audible to you? Is she audible to you? Naina? No, you're not audible. आप अपना वो हटा दो. Remove your headset. Yeah. Yeah, now you're audible. Okay. Yeah, I think I like prioritizing things because too many things at hand and what to do first, and then that way I think I lose. Okay. So you can't prioritize. So the problem is prioritizing. So things at hand and organizing. Yeah, organizing and prioritizing. Okay. So Neeta Rathore. गुड मॉर्निंग श्वेता. काम करते करते कुछ चीज याद आ गई, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, उस पर लग जाते हैं, तो ये काम भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा काम शुरू हो गया. ठीक है. So you always feel whatever you are doing is not as important as what has been left to be done. What has not yet been completed. Fine. Rashmi? For me, like that, I don't have much of to do. Like it's not decluttering. It's not a cluttering, sorry. But जब भी ऐसा कुछ हो जाता है, like I get कि at an instance I have to do something, so it comes on my, मतलब I get a wheezing problem. Okay, so it overwhelms you. Whenever you need to do more than one thing at a time, you feel very overwhelmed, and it comes out as a physical manifestation is इसका wheezing. Body पे wheezing की तरह show करता है. ठीक है. और whenever I am given a short time for it कि अभी ये करना है. तो sudden जिसको कहते हैं ना, एकदम से कुछ सर पे पड़ गया तो
we freeze. Our body in a way freezes. It starts going into a state of panic and anxiety. In such a situation, wheezing will always be a sign that आप anxiety में है body, panic में आ गई है. ठीक है. Anybody wants to add their own marker to whatever if all of these people have shared? मुझे एंजाइटी हो जाता है. आपको भी anxiety हो जाता है. I like to share my time is going towards too much mobiles, reels, and it's eating my times. Okay. So technology. The problem here is not time management, but too much time spent on technology and social media. अब देखो ना, ये इतने सारे problems, इतने सारे ये causes हैं और इसका symptom क्या है? एक lack of time management. Now, lack of time management means lack of efficiency in finishing your own tasks at the right time. अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर आप लेट हो गए तो सपोज करो आपका टिफिन नहीं पैक हुआ, तो will your husband still go to the office? Yes. The children will still go to the office. Their schools. Whether or not you want lunch time निकल जाएगा तो निकल जाएगा, बाहर से ऑर्डर करके खिलाओगे. So the first thing that you have to know is कि आपको एक दिन में करना क्या है. Guys, start scheduling. See, मेरे को schedule करना पड़ता because I have to spend my entire day with all of you. ठीक है ना, तो मेरी तो मजबूरी schedule करना अपने आप को. लेकिन even when you don't have to spend your day with clients, you need to schedule your day to make it most effective and spend each minute in the best way possible to fulfill its potential. और मैं पता है क्यों बोलती हूँ, पैसा कमा लोगे, रिश्ते कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे. The two things you will never earn back is your time and your effort. Whatever will have gone, it will have gone. These two things you will never be able to recoup. आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हमें अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, or we don't value our time so much as we value other things that this is happening. So all these people will make their own schedule. मैंने scheduler show किया था सबको, कैसे बनाना ये भी दिखाया था. आप लोग next week का schedule मुझे बना के देखो, just 1 week. If you don't know how to use Google Drive, कोई बात नहीं. I used to hate Google Drive at one point of time. So what you will do is take an A4 size of paper, कोई भी normal white, सबके यहाँ printer paper होता है, आर्ट पेपर होता है, एक पेपर लोगे, उसके ऊपर एक चार्ट बनाओगे where you will put the date, the day इसलिए मत करना, कई बार हमें कैलेंडर डेट याद नहीं रहती है, हमें संडे मंडे तो याद रहता है, हमें डेट नहीं याद रहती. So if you have the day mentioned, it will be helpful to you. You will write the day, you will write the date, you will जितने बजे आप उठते हो उतने बजे से लेकर जितने बजे आप सोते हो उतने आप वहां पे टाइम्स लिखोगे, और आप उस टाइम में क्या करोगे ये आपने क्रिएट करके मुझे व्हाट्सएप करना है on the De-Clutter वाला ग्रुप. ठीक है? Will everybody do it? So those who will send the Google Drive link can send it as a Google Drive link. Those who will send it on a paper, they will make it on a paper. Is this my promise and commitment with all the people having time problems? Yes or no? Yes. Yes. I normally make the schedule, but I never stick to it. कोई बात नहीं, पहला स्टेप है ऐसा शेड्यूल बनाओ और उसको फिर ऐसी जगह चिपकाओ जो आंखों से ओझल ना हो. It should be in front of your eyes whenever and every time you want to see it. So like I spend most of my time in my room ना, तो मेरा एक ऐसा स्टिकी नोट्स हर जगह चिपके हुए, मेरी कबर्ड्स पे, मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे हर जगह, which will remind me आज का ये important fundamental काम आज ही होना है, इस टाइम से पहले होना है. Now, Right. इस टाइम शेड्यूल के अंदर you will all put in 20 minutes के 3 slots for your social media activities. Compulsorily. उसमें आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो, जाके रील्स देखते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आपका हेडेक है, बट सबने डालना है. इससे क्या हुआ, वो जो ब्रेन को लगता है ना, हाय मेरा सोशल मीडिया का टाइम, क्या करूं मैं, क्या करूं, वो ब्रेन का डर हो जाएगा. The brain with all the goofy reels, all its entertainment, all its masala masti, and you will be able to create with it.
श्वेता, when 20 minutes means वो हाथ में आया ना तो वो छूटता नहीं है एक्चुअली. छूटेगा. मैं बता रही हूँ कैसे छूटेगा. उसका नेक्स्ट स्टेप दे रही हूँ. अपने फोन पे क्लॉक पे जाओगे. क्लॉक पे जाओगे तो वहां पे टाइमर का ऑप्शन होता है. यू विल सेट अप द टाइमर फॉर 20 minutes. We are going to train our brain into doing exactly what we want to be done, and we will not let it go till it agrees. पता है श्वेता, मेरे को फोन करना होता है ना, तो I forget to call and I end up looking at WhatsApp. और फिर लास्ट में when I get up, I think, oh, I had to call. So the whole time is gone. See, you have to understand one thing now. For you, for your brain, for your internal beliefs, वो WhatsApp पे कम्युनिटी को चेक करना, मैसेजेस को चेक करना या रील्स को देखना ज्यादा जरूरी है उस कॉल से. अगर आपके लिए वो ज्यादा जरूरी नहीं होता तो आप उसमें नहीं फंसते. द ब्रेन विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज द सबकॉन्शियस, व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट टू द सबकॉन्शियस, नॉट टू यू. Now I'll tell you one thing. अगर मुझे ना किसी स्टूडेंट से बात करनी होती है जिसका मेरे को बिल्कुल मन नहीं होता है बात करने का, कभी कभी होता है ना, you don't want to work. तो there are days in my life also when I feel आज मुझे ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी, आज कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करनी. आज अगर उसने अपनी मम्मी से लड़ लिया ना तो लड़ ले दो, आज मेरे को नहीं झेलना. उस दिन my brain will also create a barrier which will not let me communicate with the client. Now it is my job to communicate because as a coach it is a commitment from me to her that whenever you are stuck, I will. तो प्रायोरिटी हमें ना रीसेट करनी है. इट इज नॉट कि आपको अपना बिहेवियर रीसेट करना है, आपको अपनी प्रायोरिटी रीसेट करनी है और उसके लिए टाइम लगेगा. 42 days. इट इज ओके. Your subconscious will break a pattern in 21 days and create a pattern in 21 days. ठीक है. तो अगर आपको एक प्रायोरिटी को ब्रेक करके एक नई प्रायोरिटी क्रिएट करनी है, आपको कितने दिन ऑफ एफर्ट चाहिए? 42 days. तो 42 days, नो मैटर व्हाट, जब वो अलार्म बजेगा, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आपने उसको बंद करना है. इवन इफ एवरीथिंग विद इन यू सेज नहीं यार 5 मिनट और, नहीं यार एक रील और, नहीं यार एक वीडियो और, यू विल स्टिल टेक डाउन. जो अब एक मिनट, जो कमिटमेंट कर रहे हैं ना वो चैट में लिखो. आई राइट डाउन योर नेम, कमिट टू दिस. दिस इज योर बिटवीन कमिटमेंट बिटवीन यू एंड मी. मैं अभी सेशन के बाद ना चैट हिस्ट्री निकाल के रखूंगी और जिसने नहीं किया ना उसकी मेरी कट्टी पर्सनल लेवल पे. आई कमेंट नहीं, आई कमिट एंड राइट डाउन योर नेम. नेहा, आई निहाशा कमिट. कम ऑन गाइस, कम ऑन. Very good, Dr. Rupa. Commit. Excellent, Kajal, Payal, Neha, Himadri, Neeta ji, Sandhya ji, Niharika, Vandana, Lakshmi ji, Poonam Sharma. Perfect. और जिसने ना अपना सरनेम नहीं लिखा ना, ये मत समझना कि अगर आप नहीं मेरे को यहाँ लिख रहे हो आई लक्ष्मी कमिट या आई निहारिका कमिट तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी वाली थी. मुझे पता चल जाएगा कौन सी वाली थी, सबका पता चल जाएगा. पकड़ लूंगी मैं एक एक जने को बाद में. गुड निहारिका. मैम हिमाद्री तो एक ही है ना, ऐसे भी पकड़ लोगे आप. अरे मैं तो बोल रही हूँ ना, जो जिसको लगता है वो बच जाएगा. रीता, स्नेहा, सुषमा, ये जो कॉमन नेम्स हैं, मत पकड़, सोचना मत. मेरे पास हर इलाज का तोड़ है, इसका भी तोड़ है, चीटिंग नहीं कर पाओगे आप. I'm 100% श्योर जब आप लोग आज इस सेशन के लिए आओगे, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन you would have thought we will be having. That much also, I know. Yes, for sure. Because I didn't think I fit in here. So I didn't think all this was in my daily routine and I would find solutions here. Shweta ji, actually this is a required for me. Thank you for that. Thank you. Instead of an orientation, this is an practical. So I'll tell you one thing. लाइफ में ना ओरिएंटेशन जो होते हैं ना वो एक इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, लेकिन ये डीक्लटरिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हम जी रहे हैं एवरी मोमेंट ऑफ एवरी डे. ये कोई ओरिएंटेशन से नहीं हो सकता. एक प्रेजेंटेशन, तो आई हैव मेड द प्रेजेंटेशन बिकॉज आई विल शेयर सर्टेन इनपुट्स विद यू जो आप लोगों को शायद अपने पैटर्न्स और हेल्प करेंगे रियलाइज करने में. लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो दिस इज वन थिंग
which is existing in so many areas, in so many ways कि इसको हम अगर अपनी लाइफ को डिस्कस नहीं करें तो हम नहीं कर पाएंगे. So I would rather share the presentation later on for you all to go through and see आप लोग कहाँ fit in होते हो, rather than waste time over here. Because when you go back from here, I want you to at least know how to move ahead. Whether you join the program or not, वो secondary है. But जब यहाँ से जाओ ना, तो एक step by step लेके जाओ कि यार ये 3-4 चीजें करते हैं, and let's start moving ahead and declutter ourselves. That's more important to me. And I know for a fact that unlike, public sessions hote hain, so people will always understand things in a very different manner. But this is my group. We have been connecting with each other at different levels at various workshops. कितने सब महीनों से, कोई 6 महीना, कोई 9 महीना, कोई 1.5 साल. So we understand the give and the take in the form of any game also, in the form of discussions also. तो मेरे लिए आप लोगों के साथ इस टाइप से कुछ करना ज्यादा easy है, rather than putting it out where people don't know us or know me or the way I deliver. ठीक है. अच्छा, वापस चलो. अब इधर आते हैं. हमने डे पे तो करा. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी लाइफ का होता है. देखो यहाँ आया अनमैनेजमेंट. अभी एक चीज मेरे को आप लोग बताओ, विथ दिस काइंड ऑफ अ शेड्यूलिंग ये मैनेजमेंट का इशू हो जाएगा क्लियर? ठीक है. तो जो चीजें, जो एक्टिविटीज आपके दिन में सबसे ज्यादा जरूरी होंगी, मतलब which you have to fulfill no matter what. ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? Like अगर आप सेल्फ कुकिंग हो, if you do all the cooking yourself, then breakfast, lunch and dinner. If suppose you have to take care of the laundry yourself, then laundry. अगर आपने अपने स्टाफ को मैनेज करना है तो मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ का टाइम, whatever your schedule is will depend. अब इसमें क्या करोगे? सबसे पहले वो चीजें फिट इन करोगे जो टाइम बाउंड है. If your husband leaves at 9 o'clock, your breakfast and lunch tiffin has to come before 9. Otherwise, he'll leave without it. अगर सपोज ओरिएंटेशन 12 बजे है, तो 12 बजे से पहले 12 बजे मुझे ओरिएंटेशन के लिए बैठना है ना. This cannot be changed. But what can be changed? कपड़े वॉशिंग मशीन में कितने देर पहले, कितने बजे डालेंगे, that can be changed. अगर Amazon पे कुछ ऑर्डर करना है, उसका टाइम फ्रेम चेंज हो सकता है. सो जो चीजें टाइम बाउंड नहीं है, those will be put in only the empty slots of your day. Don't try to fit them in पहले. Prioritize जो टाइम पे है. तो अगर आपके घर में रोज 8 o'clock डिनर होता है, so 7 to 8 has to be dinner time, or 7:30 to 8:30, whatever. आप लोगों का अपना शेड्यूल के हिसाब से वो डिनर है ही है ना, तो उसको पहले ही डाल दो. ये तो हिलेगा नहीं, ये तो वही की वही रहेगा. तो जो अब बाकी की चीजें बची, जो टाइम से नहीं बंधी हैं, जो किसी स्टाफ से नहीं बंधी हैं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन. Now there are so many things, like when I take care of my laundry, so I have a washing machine. मुझे washing machine में कपड़े डालने होते हैं ना. I do an alternate day cycle because 3 जनों के कपड़े हैं, पूरी मशीन नहीं भरती. तो क्या करना है? कपड़े सॉर्ट करके 2 टब्स में कर दिए. मेट को बोला इस दिन तुम कपड़े लगा देना मशीन में. Now before she comes at home, I will already sort through my laundry in blacks and whites and give them to her. Now it is her headache, वो कब करेगी. अगर मुझे ग्रोसरी स्टोर से कुछ मंगवाना है और उसको व्हाट्सएप करना है कि ये लिस्ट भेज दे, I have no time post 9 a.m. So 8 a.m. every day, I sit, check my fridge, 5 मिनट लगता है, लिस्ट बनाया, भेज दिया. अब वो जब भेजेगा उसका हेडेक है. उसको अगर कोई टाइम फ्रेम है कि भाई 2 बजे से पहले चाहिए तो बोल दे सेंड बिफोर 2, पेमेंट पेटीएम, काम खत्म. This ways what I have done, मैंने अपने दिमाग को खाली कर दिया, मैंने अपने दिन को खाली कर दिया. अब मुझे ये पता है मेरे इतने बजे वाले काम खत्म. And please don't forget one thing, you will always schedule all your outings सबसे पहले, ताकि आपको ये टेंशन नहीं रहे, वो या मुझे बाहर जा रहा था, मेरे ड्राई क्लीन से कपड़े नहीं आए, अरे मेरी टिकटें नहीं हुई, अरे मेरा ये नहीं हुआ. ये सब खत्म, काम खत्म, फिनिश्ड. So I will be waiting 1 हफ्ते का सबका शेड्यूलर. कब तक भेजोगे? अगले हफ्ते से पहले, अगले हफ्ते के बाद नहीं. So today is Friday,
Sunday morning tak, I want the schedules of all these people who have committed to me. Google Drive or a snapshot, very clear cut. ठीक है, एक साल का तो अभी I don't think apart from professionals सब बना पाएंगे एकदम से, but those who people who want little organization in their life, this is the only way. The only way to do. चलो थिंग्स पे अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अनमैनेज से मैनेज हो गए हम, सॉर्टेड एंड डन विद. सेकेंड चीज आप लोगों ने बोली थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड. अब थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड क्या होता है घर में? थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड क्या होता है? लेट्स डू फिजिकल, बिकॉज फिजिकल से यू कैन कनेक्ट विद योर माइंड एंड इमोशंस इजीली. जो चीजें हम एक साल के अंदर नहीं यूज की और आने वाले एक साल तक नहीं यूज करने वाले, वो चीज निकाल दो मेरे ख्याल से. बात बताओ, शादी का लहंगा ना पिछले 10 साल से नहीं पहना और अभी एक साल और नहीं यूज करोगे तो उसको निकाल दोगे? वो कस्टम में है कि we can't do. That's a different thing. No. Now understand this. Don't make it into a thumb rule. जो 1 year वाला आप बोल रहे हो, किसी टाइमलाइन में वो ठीक था, बट जब से कोविड आया for 2 years people could not move out of their houses. तो जो उनके अच्छे कपड़े थे, शूज थे, बैग्स थे, जो वो बाहर आने जाने में यूज करते थे, वो 2 साल नहीं यूज हुए ना. सो अब विथ चेंजिंग टाइम्स हम इसको कैसे चेंज करेंगे? एनीथिंग we will divide it into 4 categories: daily utility, party utility, formal utility and sentimental utility. Sentimental utility में सारे religion, custom सब कुछ डाल देना. कौन से 4 areas हमने डिफाइन करे? कौन बता रहा है मुझे? Formal, sentimental, formal, daily, sentimental, daily and religious. पार्टी. सेंटिमेंटल में ही आएगा आपका रिलीजन, कस्टम, इनहेरिटेंसेस, गिफ्ट्स, बच्चों के पहले कार्ड, वो पहले लव लेटर्स, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा. ठीक है ना? अब डेली नेसेसिटीज में जो चीजें होती हैं उनका जो रोटेशन ऑफ यूजेज होता है वो फटाफट होता है. ओके, इट इज लाइक MTR के पैकेट, मैगीज, सॉसेज, सब्जियां जो फ्रिज में आई हैं और सड़ रही हैं. तो आपको कितने हफ्ते में या महीने में कितनी बार आपको इसको क्रॉस चेक करके इसको सॉर्ट करना होगा? daily. No, not necessarily. Weekly. So 2 देखो, weeks. नहीं, 2 weeks तो ज्यादा हो जाएगा. अगर सब्जियां 2 हफ्ते छोड़ दी तो फ्रिज सड़ जाएगा. Okay. So daily necessities के अंदर once a week. See, vegetables, हम कहते हैं ना perishables. So perishables can be done twice a week. And non-perishables once a week. इसमें क्या होगा? पेरिशेबल सब्जी, फल, मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज, खुले हुए पैकेट जो फ्रिज में पड़े रहते हैं, चिप्स, नमकीन, मीठा. नॉन पेरिशेबल्स, सॉसेज, अनाज, गेहूं, आटा वाटा, व्हाटएवर इज गोइंग टू बी ड्राई स्टोर्ड. ड्राई फ्रूट्स. अब एक चीज याद रखना, ड्राई फ्रूट में भी कीड़े पड़ते हैं, तो जिन्हें लगता है ना वो खराब नहीं होते, गुड मॉर्निंग, होते हैं. यू नीड टू कंज्यूम देम इन द राइट वे. उसमें स्मेल आ जाती है एंड द टेस्ट बिकम्स वेरी. नाउ फॉर्मल्स क्या होते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ? फॉर्मल्स क्या होता है? Work related clothing. Work related will come in your daily necessities because रोज ही पहन के जाओगे ना. Okay. जो गेस्ट के लिए या किसी फॉर्मल ओकेजन के लिए रखे रहते हैं. गेस्ट्स के लिए, फॉर्मल ओकेजन्स के लिए और फेस्टिवल्स के लिए. कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के लिए जो पहनते हैं मैडम. फेस्टिवल्स के लिए. इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, presentations, situations, important situations. और बोलो.
आप Going लोगों ने for dinner, kitty parties. that comes in party, Okay. entertainment. So formal can also mean, see, we discussed guests, we discussed important situations, we discussed festivals. ठीक है, फॉर्मल में एक चीज और आता है, ऑल योर स्टेटस सिंबल्स, जो आप स्टेटस सिंबल्स की तरह यूज करोगे. फॉर पीपल लिविंग इन सिटीज और कंट्रीज या स्टेट्स जहां पर हॉट एंड कोल्ड वेदर होता है, you need to sort through things twice a year. For people living in temperate weather cycles जहां पर weather similar, self similar रहता है पूरे साल, you need to do it twice a year. No question. Why will you do it twice a year? See, always remember one thing. Guest towels. 6 महीना यूज हो रहा है, कोई गेस्ट किसी साल गेस्ट बहुत सारे आए. The wear and tear of the towels is more. You will need to replace them faster. Yes or no? Yes. अब आपने आपके पास जो कटलरी है, जब कोई फॉर्मली आपके यहाँ आता है, so we always have a daily cutlery set and we have a formal cutlery set, right? कटलरी सेट्स को आपको चेंज करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ट्वाइस अ ईयर यू नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, ओनली ट्वाइस अ ईयर. अब जैसे फेस्टिवल्स वाला जो होता है ना, जब फेस्टिवल टाइम पे आप निकालो, एट द टाइम ऑफ द फेस्टिवल टाइम पे निकाल के जब आपने डेकोरेट किया, लगाया, करा, बिफोर यू कीप एवरीथिंग इनसाइड, चेक इट. जो खराब है हटा दो तुरंत. ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर रिप्लेस करेंगे, हम उसी साल उसको हटा देंगे और नेक्स्ट ईयर के रिमाइंडर में डाल देंगे 6 महीना पहले कि ये आना है. So formal attributes needs to be taken care of twice a year. Can you all do twice a year? Is it doable? Yes. Yes. ज्यादा तो नहीं बोल रहे ना, डुएबल लिस्ट है ना ये तो हमारी. या जैसे होली दिवाली पे पूरा घर का होता है, उसी वक्त के हिसाब से हो जाएगा ये भी. बिल्कुल, ये उसी वक्त पे हो जाएगा. भाई होली का सामान निकाला, सामान चेक किया और उसको तुरंत आपने छांट दिया, ठीक है. फिर आपका आता है डेली एंड पेरिशेबल्स. कितना टाइम लगता है डेली एंड पेरिशेबल्स को चेक करने में? 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट फॉर पीपल हु हैव बिगर फैमिलीज. न्यूक्लियर फैमिलीज 5-7 मिनट लगेगा रोज, अगर रोज करते हो. हफ्ते में 2 दिन करोगे तो 15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है. फ्रिज खोलो, ड्रॉ निकालो, बिकॉज एनी विच वेज आप डेली कंज्यूम कर रहे हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमारी आदत होती है टू पिक आउट व्हाट इज गोइंग टू गेट स्पॉइल्ड फर्स्ट. सो दिस इज जस्ट अ बेंचमार्किंग. मुझे ये चेक करना है फॉर आवर ओन पीस ऑफ माइंड कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए या कुछ हम स्किप ना करें. आगे बढ़े. सेंटिमेंट आता है memories, things connected to our memories, gifts, हमारे ये customs, religion, ये सब चीजें आती हैं. तो इनको हम सब चेक करेंगे. खाना खाओगे? खा लिया? नहीं खाऊंगी. भाई जिसे खाना खिला रहे हो म्यूट कर लो, हमें भी सबको भूख लगने लगेगी. Sorry. You will check it once a year. That's it. ज्यादा करना ही नहीं है. एक साल में एक बार भी सफाई कर लोगे आपके लिए बहुत है, बहुत है. बट व्हाट विल मेक यू डिसाइड व्हाट यू नीड टू कीप एंड व्हाट विल यू नॉट नीड टू कीप. फॉर एग्जाम्पल, माई सन इज 9. पिछले 9 साल से वो मुझे हर ओकेजन पे कार्ड्स, ड्रॉइंग्स ये देता है. अगर मैं उसको रखूं तो पूरा एक कबर्ड भर जाए मेरे पास, इतना वो ही डज सो मच ऑफ वर्क. So what I do is every year, every 6 months, when I clean my drawers, I'll pick up the best ones, the ones that mean the most to me, and remove all the rest, irrespective of kitna hi dil toote, because ये एक never ending cycle है. And I have a folder, मैं उसमें सारी उसका सामान उसमें लगाती रहती हूँ, so that one day when he grows up, I'll show it to him, say this is what you were, this is what you did. Those will be memories for him to grow happy with, stay happy with. Pick up the best and the most important, not everything. Like I'll tell you one thing. My grandfather है ना, my grandfather was very ill towards the end of his life, and he had given me a very small bottle. कि ये तो तुम दिल्ली में इतना घूमती रहती हो काम करने के लिए. उस वक्त I was not into this field. I was in a B2B field, so I used to have a lot of meetings and I would travel for sourcing and all. तो तुम ये bottle अपने पर्स में रखना. After his death,
For 3 years, 4 years, I did not remove that bottle. That bottle would be there wherever I would go. But एक प्लास्टिक की बॉटल थी ना, उसकी भी लाइफ है, मेरी हेल्थ के लिए खराब है. So then slowly and steadily I detached. In a way, I held myself back and very heartlessly I put it in my storage. 6 months बाद storage से कहीं और, फिर कहीं और, and then finally I gave it away with the blessing that, you know, you have brought a lot of strength and value to my life. Wherever you go, I hope you bring in the same strength and value. So even customs and religion से related, जैसे नारियल होते हैं, कलश होते हैं, इनको भी replace किया जाता है. So find the right time and the right place to replace what you don't need, to give away what you don't need. अब आते हैं last, party. तो पार्टी में आपका आ गया whatever you need for your kitties, whatever you need for going out, pubbing, clubbing, etc. कुछ भी हो सकता है इसके अंदर. इसको आप at least every quarter, 3, that means 4 times a year, you will counter check it. Because you know what you will see? आपका जैसे जैसे अपना ग्रुप चेंज होगा, जैसे जैसे आपका definition of party change होगा, the requirement of these things will also change. For example, once upon a time, I used to love clubbing. मेरे को बहुत शौक था. So I would go out clubbing 8 times a month, 8 to 10 times a month. Me and my husband, we would go out every weekend, Friday, Saturday, Sunday, 2-3 दिन तो जाते ही थे हफ्ते. Today, that is no longer something that gives me pleasure. It's okay for a break. It's okay for a change. So whatever clothes I would wear for that clubbing, whatever shoes I would wear, whatever accessories I would wear became redundant. अब मेरे कोई काम की नहीं है. I don't need so many of them. So then I called up my cousin and I said, यार देख, मैं तो आजकल बाहर आना जाना मेरा बहुत इस level पे कम है. Will you like some of my accessories and clothes? She's almost my size. She said, तू भेज दे. She came home, she saw whatever she wanted, she took. जो उसको नहीं चाहिए था, I gave it to my staff. जिनकी daughters थी, कि आपकी बेटियों में से अगर किसी ने कुछ पहनना है तो ले जाओ, नहीं तो हटा. What did it happen? 12 outfits गए, मेरा एक पूरा section of my wardrobe was empty. I had space to put my work clothes, which I needed more than my party clothes. So as you will evolve, as you will grow, as your tastes and choices will change, your requirement for your party accessories, clothes, your shoes, your bags, and that is at a very personal level. Party के लिए और बहुत कुछ चाहिए होता है. जो लोग parties throw करते हैं, उनकी cutleries होती हैं, उनके tissue, napkin holders, उनका decorations, table decors, your what do you call these, mats, so much of things, so many things are needed, no? So this will always then be in rotation. Always remember one thing, no matter कोई set कितना सुंदर हो, आज के दिन अगर आपने एक सेट को एक कम्युनिटी में यूज कर लिया है, in a dinner at your place, you will not like to reuse it. We all have a friend circle, we all have a business or a husband's business circle, we have ससुराल circle, we have मायका circle. ऐसे करके हमारे पास 6-7 circles होते हैं, groups होते हैं, जिनसे हम connected होते हैं. अगर आपने एक सेट को उन 6-7 ग्रुप्स में यूज कर लिया है ना, अब दोबारा यूज नहीं करोगे, गारंटी है मेरी, वो पड़ा रहेगा. उससे अच्छा किसी और को दे दो कि तू यूज कर ले एक साल, एंड रिप्लेस इट विद समथिंग दैट यू विल यूज. अदरवाइज नया तो खरीदोगे, पुराना पड़ा रहेगा, इट विल टेक प्लेस एंड इट विल बी, अरे मैं कहाँ लगाऊं, एंड देन यू विल फोर्स योरसेल्फ टू फाइंड प्लेसेस एंड सिचुएशंस वेयर यू कैन यूज इट. आपने पूरा वैल्यू निकाल लिया, अब उसे किसी और को दे दो जिसकी कम्युनिटी में वो नया है. So like my sister-in-law takes it from me, my cousins take it from me, कि जब तू यूज कर लेगी तो ये सेट भेज देगा. तो मेरा एक राउंड कंप्लीट होगा, सेकंड राउंड में किसी ना किसी के पास चला जाएगा. अब वो आगे क्या कर रहा है, नॉट माई हेडेक, आई डोंट केयर, आई हैव यूज्ड इट टू द फुलेस्ट कैपेसिटी इट कुड बी यूज्ड इन माय ओन स्फीयर. अब जो हमने ये चारों एस्पेक्ट्स डिसाइड करे हैं, क्या ये बहुत हैवी है ऑन योर हेड? Is it something that you can't schedule yourself to do? No. It's doable, na? Yes. So are we going to do it? Yes, yes. Will we try to do it or will we do it? We will do it. We will do. Chalo, commitment do. Commit. Commitment.
You all have to understand one thing. मुझे तो commit कर लोगे, अपने आप काम भी करना पड़ेगा, फिर मुझे फोटोज भेजते रहना, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया. Keep me updated. Does this clear? Does this clear? जिसके background से हाँ, उनने खुद ही म्यूट कर लिया. Great. Now आते हैं थर्ड चीज जो आप लोगों ने बोली, क्लटर का डेफिनेशन, which is not having proper space for a thing. When does this happen? When does this happen? When do you not have proper space for anything in your life? When we are hurry and we just. ओए hello. कोई कान है और एक ही पॉइंट ऑफ फोकस है, मैं एक ही जने की बात सुन सकती हूँ. Lots of objects. When you have lots of objects, okay, Vandana. When we are in hurry and we just shove things and then we don't go back. When you are in a hurry and you needlessly keep on putting things in the same place, dumping them. एक dump ground create करते हैं, Dr. Rupa. When we don't clear out the old things, when you don't clear out the old things. तो अब इतनी सफाई करने के बाद क्या आपका ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा? ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया? क्लटर का ये डेफिनेशन फिनिश? Yes, the problem is resolved with that. Yes, now the only thing that you need to deal with is hoarding or possess, the obsession to possess and own things. अपने फंडामेंटल चीज क्या है? इसके लिए ना आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड वन थिंग. बाय लेटिंग गो एंड सेंडिंग अवे थिंग्स, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम खाली. You will not live from a limited perspective. एक चीज याद रखना, एक लीटर की बोतल में अगर पानी भरा हुआ है and you tell भगवान मुझे और पानी दे, तो वो पानी नहीं दे सकता, बिकॉज आपके पास वेसल ही नहीं है टू फिल इट. राइट रॉन्ग? राइट. सो अगर आपको पानी चाहिए भगवान से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको खाली करनी पड़ेगी. पहले जगह खाली करनी पड़ेगी. Therefore, you need to be empty to create. So whenever you tell भगवान ना, भगवान नया बेड चाहिए, पहले पुराने बेड का एग्जिट बना लेना, तभी नए बेड की एंट्री होगी. जब आपको लगे नया मिक्सी चाहिए, लाने से पहले हटा दो. जब तक वो जाएगा नहीं, दूसरा आएगा नहीं. But that doesn't mean चलती हुई चीज को फेंक देना. Please give it to somebody who will use it. Yes. Who will cherish and use it. And when you send it to them, bless it. Be in gratitude for coming into your life. And tell it कि वे जिसके घर में भी जाना ना, उतना ही प्यार, उतनी खुशी और उतनी ग्रोथ देना जितनी तुमने मुझे दी. कभी मिट्टी भी ग्रोथ देती है. अगर खाना नहीं पीसे ठीक से, तो खाना ठीक नहीं बनेगा. स्पाइसेस ठीक से नहीं पिसेंगे. Everything in your life, whether it is a piece of say cutlery, any electrical, anything, clothes, shoes, have always added value to your life. So when you give it away, bless it. Don't say pada hua hai le ja. No, this is there. Would you like to use it? Please take it. तो अगर हम ये सब कर रहे हैं, तो physical clutter problem resolved. With physical clutter being resolved, what all will you resolve? इसके साथ कौन से areas of the clutter will be dealt with? Material home objects. और टाइम थोड़ा सेव होगा, mental clutter. Mental clutter खत्म हो जाएगा, बिकॉज सबसे बड़ा, जब हम सामान चारों तरफ देखते हैं, it stresses our brain. It creates confusion and chaos in our brains. Declutter is essential for peace in our minds. Clear? Yes, clear. Now, what is mental clutter? Past events. Okay. चलो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से. अब हम दिमाग के ऊपर किसी भी चीज का बोझ होना is a mental clutter. Mental clutter is memories. हाँ. पुराने गिले शिकवे. मेमोरीज में आ गया ना पुराने गिले शिकवे. Then ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है, all the pending tasks.
list of And stress over menial things. to do things. anything that Incomplete. that makes us uncomfortable, as in objects. Incomplete things, excessive objects, or beliefs, our own beliefs. Beliefs को मत भूलना, सबसे बड़ा mental clutter belief है आपका. और क्या होता है? Habits. Dr. Rupa? And when we are living in for example, if my room is physically cluttered, looking at it, my mind is also burdened. I don't have that. So physical clutter. Yeah. Okay, or? Because I've experienced once I clear my clutter, I'm so relieved, and the big burden is off my head. Yes, Will agreed. confusion also be there? Confusion आपका आ जाएगा, ठीक है? Chaos and confusion. This chaos and confusion can be in your physical space, your life, or any other thing as well, any area of your life. और क्या हो सकता है? Expectations. And psychologically also, like sometimes you have like so many things going on and you cannot process. Mental chatter. और बोलो. जो आप लोग बोल रहे हो मैं उसी को थोड़े shorter and precise words में करके दे रही हूँ. All kinds of emotions, man. Jealousy. But emotions is created from the mind. Thoughts create emotions. Judgments. Okay. Judgments. So one thing now, for everybody, so Dr. Rupa has raised this point. Let's take 1 minute here. जब मुझे ये thought आया कि किसी ने मुझे insult किया, तो मेरे brain ने क्या command दिया? What does my cognitive brain or my subconscious brain command the limbic or the chemical factory of my body? Fight or flight. To retort. You feel ashamed. To feel ashamed, to fight or flight, Dr. Rupa? To retort is again to fight. Retort or to react. Now, the minute it makes you feel insulted, the limbic brain, which is the chemical factory of your body, gets the command, I am insulted, or I am unhappy, I am stressed, somebody's hit me, I need to run away. Instantly, वो क्या करेगा? Cortisol release करेगा, thyroxine release करेगा, and क्या create हो जाएगा? A chemical imbalance will make you feel stressed. That is why you have more serotonin, you are happy, and no matter what people are saying and doing, you'll stay happy. So emotions are a byproduct of our thoughts. So अगर हम thought पे control करेंगे, तो emotions automatically एक बहुत मतलब extensive level तक deal हो जाएंगे. So emotional trigger will not come under mental chatter. What can come here is your own triggers and reactions. ठीक है? तो भैया ये वाली जो लिस्ट है ना, ये तो सिर्फ शेड्यूल बनाने से नहीं हो पाएगा. शेड्यूल बनाने से और अपने आप को decluttering physical spaces की करने से what can we deal with? We can deal with the list of to-do things. We can deal with the incomplete things. We can deal with the excessive objects. We can deal with the physical clutter. But there is one list of things. So let me put it like this. Memories हम यहाँ से हटा देते हैं. Physical को हम इसके नीचे लिखते हैं. Now understand, this can be dealt with doing and taking care of our homes and spaces. But for this, what do we need to work on? Our subconscious beliefs. Our subconscious.
else do you need to deal with? Behavior. Conditioning. Anybody wants to add more? Add. Come on. जिन्हें पता है वो add करो इसमें. Self-talking. No, I did not ask what will we do. I asked what all do we need to work on to deal with our mental. Break the patterns. Break patterns. Patterns पे work करेंगे हम. और क्या करेंगे? Frequency. भी work करना है. Frequency से कुछ नहीं होने वाला है. Cognitive brain को cognitively ही deal करना पड़ता है. If you only work on frequencies and do not work on what is creating those frequencies, they will come back. That is surgery half done. It will not work for a longer perspective. What else, guys? Come on, quick. Does affirmation come in this? I never asked what do you need to do. Please listen to my question. What all do we need to heal? देखो आप लोग सुन नहीं रहे हो. अब देखो listening क्या पे दिमाग में कितना कुछ चल रहा है कि आप लोग सुन नहीं पा रहे हो. This is also how clutter affects your life on a daily basis. Can you see? हमें हमारा रूटीन भी ठीक करना पड़ेगा ना. रूटीन तो आ गया ना ऊपर ऑलरेडी लिस्ट ऑफ टू डू थिंग्स में. वो तो फिजिकल हमने पहले कर लिया. शेड्यूलिंग टूल हो गया. फिजिकल क्लटर को डीक्लटर करना भी हो गया. वो तो 2 टूल्स हमने कर लिए. नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. Only this part. Guys, our emotional trigger to our memories. Problem memories में नहीं थी. किसी ने थप्पड़ मारा. प्रॉब्लम ये नहीं थी उसने थप्पड़ मारा. प्रॉब्लम ये थी कि उसे थप्पड़ से हमें कैसा लगा. The pain, the trauma, the insult is the problem. The problem was never in the memory. The problem is in the emotional reaction that we had to the memory. For all of this, to work on our subconscious, to work on our conditions, our patterns, our behavior, our emotional reactions to basic situations, memories, and people, this is where we need help. Now here, affirmations, NLPs, cognitive behavior therapy, understanding why we are reacting to a certain situation in a certain manner, identifying कि वो कहाँ से निकल कर आ रहा है, उसको ठीक करना, उसको change करना, and then realizing where we are going wrong. So identifying it, मैंने बोला मेरा problem है, मेरा limiting belief. Realization होता है that yes, this belief is affecting my life. Okay, like we all know na, whatever is in our mind is in our reality. This is identification. But आप लोग क्या बुरा नहीं सोचते? Do you think negative or no? Yes. Knowing the fact that negative thoughts will create a negative reality, why do you think wrong and negative? Because the realization of how it is affecting our very everyday life does not exist. So realization of how something is affecting you is very, very important. जब तक identification और realization नहीं होगा, आप उसको heal नहीं कर सकते. Clear? This is the main area where we will work, where we will focus on mental decluttering. हम physical decluttering program में touch नहीं करेंगे unless and until it overlaps emotional, mental or spiritual clutter. We are not going to touch it. This is the area where we will work. If you want to take screenshots, if you want to write down quickly, I'm giving you all 1 minute. Write it fast. Now, emotional clutter.
अब इमोशंस कहाँ से ड्राइव होते हैं? इमोशनल क्लटर क्या होता है? Yeah, like you said, it's from thoughts. It's from thoughts. Thoughts के साथ आ गया belief, ठीक है, connection to memories, और क्या होता है? Conditioning. Guys, ego. Patterns, habits. So do you see one thing? Mental and emotional overlap in many areas. Why? Because wherever there is a mind, there is a emotion. Wherever there is a thought, एक emotion create होगा, happy, sad, कैसा भी. So जब हम mind पे work करेंगे तो emotions automatically work होंगे, और emotions पे करेंगे तो mind automatically work होगा. But the difference is, mind, when we do mental declutter, we are going to work on the concept of I am poor. But when we do the emotional declutter, we will work that being poor makes me feel helpless. I am not good enough. How will I survive tomorrow? ये difference समझ लो, ये बहुत जरूरी है. Emotional clutter clear है. फिर आते हैं physical body. अभी आप physical body तो भाई ऐसा है, एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, एक अच्छे योगा या जिम इंस्ट्रक्टर के पास जाओगे, और फिजिकल डीक्लटर हम एक डाइटिशियन के साथ नहीं करेंगे, हम एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ करेंगे, who will ensure that she will take care of her body's pH level, मतलब alkaline to acidic and acidic to alkaline. She will ensure that we are getting enough nutrients in our body to keep our body strong and healthy. From the level of physical body declutter, the only thing that we will focus on in the program will be perhaps Bij mantra chanting for chakra balancing or something like that. We will not be focusing too much on physical, because जहाँ पे mind game में आता है, if you deal with the mind and the thoughts, most of the problems with your body can be dealt with. तो फिर हमें सिर्फ upkeep करना है. So for this, each one of you should go to a nutritionist, go with all your problems and understand why it is happening. Get a balanced nutrition chart. कि आपको कौन सा चीज और बढ़ाना है अपनी डाइट में और क्या कम करना है. So I'll give you an example. For me, I am a very poor eater. मेरा scheduling for food is very poor, very, very, very poor. Because for me, food has never been a priority. अब उससे मेरे को प्रॉब्लम क्या होता है, पहले तो कुछ नहीं होता था, अब आजकल क्या होता है, if you don't eat for longer intervals, acidity. Now once you have acidity, your throat will automatically start getting affected. Now I can't afford that, so I have to schedule myself to eat properly. So when you know कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, whatever is made, I can go ahead and consume that. I have to be very careful in my selection of food. Because I am sitting for 12 hours a day and working, I have to ensure कि मेरे डाइट में न्यूट्रिएंट ज्यादा है and फैट कम है, क्योंकि अगर नहीं तो मैं बैठे बैठे काम करूंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा. एक मिनट ये लीजिए. बर्तन clear? Any questions for this? No. Now बचा क्या? Relationships. Relationship clutter का मतलब क्या होता है? What is relationship clutter? Not handling all the relationships in their specific respective respects. Okay, so management of current relationships लिख दे.
mismanagement of current relationships. Also getting too involved in their problems, and trying to solve their problems all the time. Getting over, very good. ये जिसने भी बोला, excellent. Getting over involved in the issue, in the problems, or problems भी नहीं, in the lives of others. और क्या हो सकता है? ईगो कैसे प्ले करेगा? जैसे अभी उन्होंने बोला कि हम मिसमैनेज करते हैं, हम दूसरों की जिंदगी में इन्वॉल्व होते हैं, सो ईगो है, बट वो ईगो इफेक्ट कैसे करेगा ये बताइए. Like always thinking that I am right, you're wrong, blame game I आ have to जाता be है the उसके best. पीछे. So I will solve. power struggle in a relationship. Yeah, blame game. Blame. So everything comes from power struggle, na? The need to right. prove myself, right? So power struggle आ गया. और लोग क्या कहेंगे? Okay. People pleasing. Basically. People pleasing. Pleasing, हाँ. और letting other like walk all over you. becoming a doormat. Yeah. Everyone is dumping their shit to you. और अगर becoming a doormat है, तो उसके साथ में इसका opposite भी आता है, over controlling. Over control mechanism is also very important in a relationship. Now, when we are taking relationships can be friends, family, immediate family, the bigger and the smaller circle, everywhere. Guys, एक चीज आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है. Relationship clutter can also be people who are no longer needed in your life. 100% true, madam. Yes. I was thinking what I did not mention. Thank you. Guys, ये सबसे बड़ा पंगा है जिंदगी का. People who we do not need and people who we listen to while not needing. And we try to like persuade and then get into that level of वो होता है ना अच्छी बनने के लिए या whatever it is. We try to do that which is not even necessary. इसके लिए हमें करना क्या होगा? Relationship clutter से deal करने के लिए what are the areas that we need to work on? What are the areas? I'm not asking how we will work on. I'm asking what are the areas that we will work on. अయ్यो कोई तो बोलो. Emotions first. Emotional attachment. Emotional attachment to what? To the people, to our own behavior, to what they have to say, to what they have to give into our life. Yes or no? And learning about which relation is healthy and toxic. Like you have to analyzing. Analyzing the relation. Healthy and toxic. यार स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ मैं यहीं पे शॉर्ट में डाल देती हूँ. Analyzing relationships. To see which one is toxic. What else? Letting go. Prioritizing what? Time, quality, how to be where, in which relationship. Prioritizing quality and ourselves, not time. Yes. Not time, not anything else. Ourselves. कि उस relationship से मुझे क्या मिल रहा है? Is that relationship adding value to my life? Choosing when to say no and yes. How and when do we need to say no? How and when do we need to say yes? This comes in becoming a doormat. Boundaries. I'm sorry? Having boundaries, strong Creation of boundaries. Very good. और मैं ये जानती हूँ अगर इतना ही कर लोगे ना तो बहुत declutter आप कर लोगे अपनी lives को. Now over here again the same simple system of identification, realization and action is needed. देखो
कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिससे हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते फिजिकल लाइफ में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे इंटरनली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं ताकि उनका बिहेवियर, उनके शब्द, उनकी सोच हमें हिट ना करे. फॉर एग्जाम्पल, there was so my one of my relatives had a girlfriend, and she was a divorcee who was stuck in a very bad situation. So we were talking one day, and she wanted to do the runes workshop. This is about 2 years back when I had just started with Transcendence. So because money was an issue, bringing up, she was a single mother, bringing up her daughter was an issue, a lot of issues were there. I chose to work with her without taking any extra payments or anything. Later on, उन्होंने मेरी घर में, मेरे परिवार में, मेरे प्रोफेशन में, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरी धज्जियां उड़ाई. So what did I do? The first identification was I do not need this relationship in my life. The second realization was कि ये relationship मेरी life में chaos, clutter add कर रहा है, ना कि wellness and well-being, happiness, support, कुछ नहीं दे रहा मुझे. तीसरी चीज मैंने क्या किया, पहले मैंने इनसे अपनी कार्मिक हीलिंग करी, बिकॉज आई एम ओनली अट्रैक्टिंग वॉट एवर इज विद इन मी. तो कहीं ना कहीं मेरा उनसे कर्म बंधा है ना, तो मेरे को क्या करना था, उनको कार्मिक हीलिंग दे, उनके साथ कर्म की हीलिंग करनी थी, उस कर्म की हीलिंग जिसने मुझे दिक्कत दी थी. एंड आफ्टर दैट आई सिंपली टुक अ स्टेप अवे फ्रॉम रिलेशनशिप. उसका मतलब क्या हुआ, अब जब वो मुझे फोन करती थी, इफ आई वांटेड टू टॉक टू हर आई वुड रिसीव, अदरवाइज आई वुड मैसेज हर, आई एम सॉरी, आई एम बिजी. Slowly and steadily, she also got the message that I will not be able to help her in her professional sphere, and she stopped connecting with me without any ladai, without any jhagda, without spoiling my relationship with my cousin who was into this relationship. I took a stand for myself and decluttered my relationship with her, letting go of one person who was adding negativity to my life rather than support or love or nothing. मतलब न्यूट्रल भी नहीं थी ना वो, तो न्यूट्रलिटी तक वो नहीं मुझे दे पा रही थी. Do you understand how relationship clutter can affect and work for you all, and how can we work with it? But then the first step here was what? It is my karma that is coming back to me, not that it is her fault for ruining my life. तो मेरा पावर स्ट्रगल कैसे खत्म हुआ, मेरा कर्म मेरे पास वापस आ रहा है, लेट मी हील इट. We will all be working on all these areas: emotional attachment, analyzing relationships which are toxic, prioritizing quality and ourselves in a relationship, choosing when to say yes and no, and creation of boundaries. Any questions for relationship clutter? अनीता जी, आपका एक क्वेश्चन था एक्सपेक्टेशन, उसको मैं बाद में लूंगी, बिकॉज अगर वो ले लिया अभी तो पूरा सब हम यहीं अटक जाएंगे. So I'll take that at the end. No problem. Thank you. Thank you. Any questions here? I have a question, madam. Yes. In your case, the person was not from your immediate family, right? He was a friend of yours. He or she was a friend of yours, or she was a client of yours, I feel, right? No, she was not. She was my cousin's girlfriend whom he was engaged. Who was he was planning to get engaged to. Okay. If a person is in our close family, like a sister or a brother, will this work out? Of course it will. See, you have to understand, it will all be, what did I say? The first thing I said was, आप उनसे disconnect नहीं कर सकते physically. Yes, that's true. तो आपको उनसे सिर्फ इमोशनली एंड मेंटली डिस्कनेक्ट करना है, कार्मिकली डिस्कनेक्ट करना है, ताकि उनके होने या नहीं होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़े. फर्क नहीं पड़ता. Yes, yes, agree. That is what we will. Got it. जी. Thank you. You're welcome. And the last aspect of declutter comes in spiritual declutter. Spiritual clutter क्या होता है? Trying to learn. कुछ आता है, मैं राइट हूँ. आप फिर से दो जने बोले, मुझे समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा. मुझे बहुत कुछ आता है, मैं राइट हूँ. I am right, you are wrong. या फिर let's make it ego. एक शब्द में ego. और क्या हो सकता है? Just gathering knowledge
more and more. Gathering knowledge without using it. So gathering knowledge बुरी नहीं है, but gathering without knowledge using it, yeah. without using it. Perfect, Sushma ji. Spiritual Or shopping. what is spiritual shopping? Give me the word. What do you mean by spiritual shopping? Like it's like jumping from one place to another. Okay, I want to learn this. I want to learn this. I want to learn this. But what is bad about it? Like there are so many spiritual different like see, I'll just give an example. Like I'm pranic healing hai, तो चलो मैं रेकी भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं, but I'm not using them at all, like it's so that is I think वो भी आता है ना इसमें, like you should be able to again sort out कि okay, ठीक है मैं इतना learn करती हूँ पर मैं I will use that, like you know, I mean. So वो आ गया आपका gathering knowledge without using it में, but what you said about spiritual shopping will fit in one more aspect. I think it's like glorifying your knowledge, spiritual knowledge. You know a little bit, but you show it like as if you are some master or something like that. I think spiritual shopping is suppose we learn Reiki, we buy Reiki products and keep it in our house, then we learn about Feng Shui, then we buy Feng Shui related products. Like we keep cluttering our space. That is physical clutter. देखो spiritual shopping क्या होता है कि जब हम खरीद रहे हैं based on the market trends without seeing if it is even applicable for me. Like how Dr. Rupa said, no ma'am, I attended this session thinking that I do not belong here. Right? That was for her. She was thinking, okay, I'll attend now because Dr. Rupa always attends all the orientations regardless of the fact वो कौन से topic पे है या वो उनका interest है. So for her, it's a gathering of pointers that she can use in a professional sphere. ठीक है, अभी suppose करो डॉक्टर रूपा ने ये कोर्स ले लिया होता without being able to utilizing it or without seeing her space in it, that would have been spiritual shopping. It is like going to buy a purse when you already have 30 of them. You don't need it, but you will buy it. या फिर आपका साइज बॉडी साइज है XXL और आप एक S साइज खरीद के बैठे हुए हो कि यही पहनना है मुझे. That is spiritual shopping. Without seeing its relevance in your life, आपने खरीदा. और क्या हो सकता है? It can be like a FOMO, fear of missing out. यानी आपने किया तो कब करूंगी या miss out हो जाएगा. Perfect. Fear of missing out. और क्या हो सकता है? ये fear of missing out will also come in mental and emotional clutter, not just in physical clutter. अंधश्रद्धा, blind faith. Perfect. और अब हम आ रहे हैं मुद्दे की बात पे, तो अब आ रहे हैं घूम फिर के. Fearing God, becoming God fearing. Our belief for our own self. I am a human being. सब कुछ मेरा इधर ही है. Letting go of the beliefs of spirituality. कि I am not a soul. जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, everything is about material, everything is in the now. But a spiritual person will always look at the broader perspective. It is about the soul. So when people don't look at themselves as a soul or as a combination of a body and soul and only look at what they can see, it means you are restricting your own beliefs towards your own potential in yourself. और क्या हो सकता है? Living a life of consequences. So fearing living a life of consequences. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? Living a life of consequences क्या होता है? Living a life of consequences का मतलब होता है एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें हर एक्शन, हर शब्द का एक कॉन्सिक्वेंस है और हम सिर्फ कॉन्सिक्वेंस को देख के कर्म कर रहे हैं. हाँ, ऐसा होगा तो ऐसा, मतलब मैंने ऐसा किया तो ये होएगा. And like if I do that, if I am late, I will miss the bus. पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे तो क्या करोगे? दूसरों के घरों में नौकरी करोगे. अगर मैंने ऐसा किया तो भगवान मुझे पनिश करेगा. So whenever the only thing we see is consequences. Our actions are not based on choices. I choose to become a good person. I choose to
speak the truth. I choose to express myself. Rather, अरे मैं सच बोलूंगी तो मेरे को कोई बुरा बोलेगा तो मैं सच नहीं बोलती. It is born out of, karma is born out of consequences, not out of choice. This is one very big portion that we will be working on. Because ultimately अगर आप अंदर देखो, मेरा एक मानना है कि जिंदगी में कुछ भी हो, अच्छा बुरा होता रहेगा. That's just because you're evolved, you're enlightened, you're a spiritualist, does not mean life में problems नहीं आएंगी. Rather life में evolved problems आएंगी. Life में over enlightened problems आएंगी. Problems तो आएंगी. So idea has to be कि प्रॉब्लम जब आए तो आपका मन, आपका चित्त शांत रहे. दुनिया हिल जाए, अंदर से आप हिलो नहीं. अगर आप ऐसी स्टेट को अचीव कर लेते हो तो दुनिया का कोई क्लटर आपके अंदर बैठ नहीं सकता है, वेदर इट इज एट द लेवल ऑफ माइंड, इमोशन, spirituality or physical organ. Because then whatever will come in the state of allowance, give you your lesson in surrender and move out. This is the basis of the program self-realization and internal declutter. और कुछ भी नहीं है. And I hope all of you have seen how what is affecting your life. हर जने को हर चीज affect नहीं करेगी. Just like everybody does not like vanilla ice cream and everybody does not like chocolate ice cream, everything will not fit into every person's life. You have to see what does fit in. But एक चीज याद रखना, mental, emotional and spiritual clutter हर जने की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो अगर हमें ये तो हमने किया, अब ये क्लटर्स कैसे होते हैं और क्या क्या वर्क होता है, कैसे हम इस पे वर्क करेंगे. Now, when we talk about decluttering, what is the benefit of decluttering? Not at physical level, at mental level, emotional level and spiritual level. What is the benefit of decluttering? How will declutter help you? We'll be making place for newer things which are useful for our improvement in our life. So making space for the new. Or changing behavior can help us think differently so that it works on our so transformation. Yeah. Transformation. Growth. More creation. Let me write down, guys. Let me write down. Creation, growth, Peace in life. peace, Clarity. mindfulness, More time, quality time for whatever we want to use. ample time for what you choose to do. Yeah. Okay. When there is peace of mind, it's easy to connect to divine, and that way we are evolving positively. Connection to the divine. अरे divine से कब connect होते हैं हम? When do we connect with divine? And actually, we have no burden around us, and we are at peace. When do you have no burden around you, Dr. Rupa? That's what, when we declutter, of course. For me, physically, when I declutter around, When there are no thoughts. When you are connected with yourself. Okay. Yeah, that is what, when I'm at peace is what is the connection what I get. Connection, exactly. Yeah. When you are at peace with yourself, you are at peace with the divine. So you see, एक circle है पूरा. But more than anything else, the point अभी तक आप लोगों ने मुझे नहीं दिया is the realization of what you are, who you are. Okay. Of what I am. Or rather, who I am. Who am I? वाला question जो होता है ना, बहुत बड़ा. Who am I? What do I want to do in life? What is important to me? What do I enjoy? I can guarantee you ना, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग क्या कहते होंगे, खाना क्या खाओगे? अरे जो बनेगा, जो सब्जी है बना लो. पसंद क्या है? अरे जो बनेगा खा लेंगे हम. Find our purpose. Find your purpose. Rashmi Periwal, you will submit it. Get a notebook, make the notes and submit it.
डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। जहां पे हो वहां से एक पेपर का शीट और एक पेंसिल लो और बना के भेजो, बिना स्केल के भेजना। योर मार्क्स विल नॉट बी कट फॉर थोड़ा खिचड़ी एंड थोड़ा अननीटली लिखा हुआ। डू इट। देखा, एक्सक्यूज, subconscious brain telling I don't want to change. This is It's not an excuse. मैम मतलब यहाँ पे नहीं तो मैं गूगल शीट पे ही डाल देती। तुम गूगल शीट मत करो। सुनो, मुझे पता है आप कहाँ पर हो। मुझे पता है वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत देर नहीं होता है आपके पास में। वहां से एक शीट पेपर का लोगे, उनको बोले एक पेपर दे दो, एक पेन दे दो, वो मिल जाएगा ना? ओके। हाँ, पेपर पेन मिलेगा ना? ठीक है, पेपर पेन पे आई ट्राई माय बेस्ट। एंड फिर अभी मुझे ऑफ करना पड़ेगा। आई हैव टू ऑफ कर लो, यू लीव इट। सी, आई व्हाट आई टेल यू, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इट इज नॉट यू, इट इज योर ब्रेन। अगेन अंडरस्टैंड, व्हेन आई एम सेइंग एक्सक्यूज, इट इज नॉट योर एक्सक्यूज, इट इज योर ब्रेन्स एक्सक्यूज। अपने ब्रेन से अपने आप को सब जने अलग कर। योर ब्रेन डज नॉट डिफाइन यू। नंबर 2, हम हमेशा वो देखते हैं जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द ब्रेन वे ऑफ नॉट लेटिंग अस डू व्हाट इट डज नॉट वांट। So we will always start focusing on what we can do. Rashmi has gone for her naturopathy treatment. So वहाँ पे mobile and electronic usage is very limited. But paper pen तो दे देंगे वो, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। So the brain has to be taught कि मुझे अगर ये करना है तो मुझे करना है। Baby, I can't use left, I will use right, but I will do it. Now I want peace in relationship if we declutter. वो तो सब में आ जाएगा। देखो, पीस इन, जब पीस अपने साथ और डिविनिटी के साथ आ गया तो वो हर एरिया में आएगा आपके पास। यू नो, द बिगेस्ट थिंग इज वट एवर कम्स टू यू, 100% enjoyment in whatever comes, 100% I would say acceptance, enjoyment, satisfaction in whatever will come to you materialistically, relationship wise, emotionally, mentally, spiritually. अभी इतना कुछ होता है कि हम फंस जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सोचे क्या ना सोचे। जो आएगा ना उस टाइम पे, वो आपको 100% सेटिस्फैक्शन देगा गाइस। अब मुझे एक बात ये बताओ, हु डज नॉट नीड टू डीक्लटर हियर? अब आफ्टर डिस्कसिंग सो मेनी एस्पेक्ट्स, सी आई एम टेलिंग यू, हो सकता है किसी की लाइफ में मटीरियल क्लटर नहीं हो, इट इज पॉसिबल। माय क्वेश्चन इज, how do you define whether I fit into it or not, whether declutter is something that I need to do or not? Coming here itself shows that we all need somewhere or the other. Okay, coming here, but wo theek hai, but how to identify whether we need to declutter? Give me some signs, give me a few signs. Yes, Anita ji, we actually all need it, but sometimes anger issues, so we'll put it emotional trigger, anxieties and everything, it's in that emotional में आ जाएगा anxiety, panic, anger। और क्या होता है, so when we suffer from any kind of an over the top emotional trigger, not a problem Rashmi, I will wait for your schedule on paper, if not on spreadsheet. I know आप spreadsheet में करते हो, but paper पे करके भेज देना। Okay. Physical ailments also, Shweta. Physical ailments. Very good. Physical ailments. और mood swings, emotional mood swings, no, but mood swings will come with emotional triggers only, so let's leave that। और क्या हो सकता है? Unclarity of mind, mental confusion or chaos, overthinking, very good, overthinking, fear, sorry, fear तो emotional trigger में आ गया। Dr. Rupa, when do we need to declutter? When do we how do we identify when do we when need we to are declutter? drained. Being drained.
So will Unmute. being unorganized come in this? Unorganized. Yeah, disorganized way of routine is one such I can identify with myself and with relationships also. Yeah, so When unorganized. Lack of promptness. Lack And of cheating in relationships, man. Cheating in relationships, when we identify and we know about it. So I'll tell you one thing, not only cheating in relationship, but cheating in everything. मतलब diet follow कर रहे हो? Yes. Cheat किया. So cheating not only, very good point, not only cheating in relationship, but cheating in your everyday life in different ways. जैसे आपको 11 पाठ करने हैं, अरे भगवान आज टाइम नहीं, कल से शुरू कर लेंगे. जो भी करना है उसमें आप चीट कर रहे हो. And whom are you cheating? You're cheating yourself. You're not cheating anyone. Ma'am, what is promptness? Promptness means कि अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं अभी कर लूँ. If I have the time, I do it now. Now, suppose I'm talking to you. Right now, my mate came. She said, I have to go and I need to do some work in your room. So I could have told her, 1 घंटे बाद जाओ, ये करो. ऐसे नहीं, तुम अभी कर लो. I'm working, तुम कर लो. And I put on my headphones so that there is no sound filtering to or fro. And वो हो गया. अब बीच में अगर कोई और आके मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं उसको इशारे से जवाब दे दूंगी. That is being prompt in a situation. अगर मुझे ये याद आ गया, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, quickly I go and get it. Without my mind focusing on, अरे पानी का ग्लास लेने जा रही है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले. या फिर अगर मेरे को मेमोरी आई है, a memory comes into my mind that, you know, my mother slapped me, I don't remember the 10 other slaps that I got. I just remember that one slap and I can make peace with it in that moment. Immediately I can let go of that feeling. When I come across an outfit I don't want to wear, promptness would be immediately telling or identifying someone who can use it and giving it to them. So promptness means कि हमें जो भी करना है हम उस मोमेंट में उसको फटाफट बिना डिले, लेजीनेस या प्रोक्रास्टिनेशन के कर सकें. Always trying to, please let me finish. Always trying to fill or get filled. Always trying to fill expectations or get them filled or get them fulfilled rather. क्या मतलब होता है इसका? कि हमेशा किसी और के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते रहना या ये एक्सपेक्ट करना कि कोई और हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेगा. ये कब होता है? जब माइंड में क्लटर होता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो अ क्लटर. Clutter and emptiness also, I think, right? I'm sorry? Clutter plus, I think somehow it's emptiness when you don't have a lot of expectations. No. Emptiness is not clutter or declutter. Emptiness is emptiness. Clutter is when there are things which are not needed or things which are not supposed, which don't have for a place. this point I'm telling, for this point only, 9th point, always trying to fulfill expectation. Like we expect a lot from a relation or a people or a family, and when we don't get, we feel like we're undeserving or unworthy. अच्छा मुझे एक चीज बताओ वंदना, एक चीज बताओ. Is it possible to let go of all expectations from any part of our life, any relationship or any aspect? Is it even possible, practically possible? And is it correct? Now, I want to ask you one thing here. If you are coming to me and sitting in my space, what is the one expectation that you come? कि कुछ सीखेंगे. We'll learn something at least. It is always some expectation which will bind us to a situation, object, or a person, or a relationship. Always. However, जब हमारी जिंदगी expectations की वजह से चलती है तब गड़बड़ होती है. When it is only expectations that are connecting us all the time, that is the problem. When expectations lead our life, that is where we fall short. Why? Because एक छोटा example, if a husband and wife are married, sexual activity or sexual relationship between the husband and wife is a expectation. अगर वो husband या wife fulfill नहीं करे तो उसको कहीं बाहर जाना पड़ेगा. वो expectation सही है,
लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि मेरा पति या मेरी वाइफ सारी जिंदगी मेरे गुलाम बनकर रहे, वो एक्सपेक्टेशन से अपनी जिंदगी को लीड करना गलत है. The same way, just because you are somebody's partner does not mean that you have to fulfill their expectations of a partner. However, you need to fulfill the role, the expected actions and spaces of the role that defines you as a partner. It is not possible to give up 100% expectation. Guys, अगर छोड़ देंगे तो जिंदगी जीना छोड़ देंगे. Expectations are not wrong till they don't lead your life. We want to connect to the divine with an expectation that we will understand what life is. We will go back to Him. We will find our purpose. We will find our path. We are connected together with the expectation of learning, transformation and growth. अगर वो कनेक्शन आपके मेरे बीच में नहीं हो तो आप और मैं एक साथ बैठ ही नहीं सकते. Do you understand? Expectation galat nahi, and that is why I said expectation is one point I will take at the end, because uska daira bahut bada hai. The bandwidth that comes under expectation is huge. Do you understand? Each one of us is in some phase of these 9 points, and this is not exhaustive. अगर हम लोग सब सोचने लगे तो इस लिस्ट को हम और बहुत लंबा खींच सकते हैं. So if we are stuck on any of these points or one or more of these points, some space in our life needs to be decluttered, whether it is our mind, body, soul, emotions, whether it is our homes, whether it is our relationships. कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो हटाना है, कुछ तो ऐसा है जिसको साफ करना है, झाड़ फूक करनी है और उसको अपनी सही जगह पर रखना है. This is the basis of clutter and declutter, and this is the basis on what we are going to work predominantly in 6 months starting January 13th or 18th. So now let me tell you a little bit about the program for those of you who have no idea. अब मैं वो presentation खोलूंगी जो मैंने बनाई है. But my presentation, I will not go through the entire presentation because we have already discussed everything that the presentation covers to our personal life. I will share this presentation in the group. You all can go through it later. But what are we only going to work on predominantly in this program is going to be emotional, mental, and spiritual clutter. And examples and all हमने discuss करे हैं क्योंकि इसलिए अब हम इस presentation को touch नहीं कर रहे ज़्यादा. We will straight go back to the point of the program, and the program is a 6-month program जिसके अंदर महीने में सिर्फ 2 क्लास होंगी live. Only 2 classes. Why? Because जो भी आप उन 2 classes में सीखोगे उसको आपने अगले 15 days तक apply करना है, उसको use करना है. उससे कहाँ पे आप आगे बढ़ पा रहे हो देखना है, कहाँ पर आप अटक रहे हो ये देखना है. अब देखो भाई, जो नर्सरी लेवल पे है वो नर्सरी लेवल की डीक्लटरिंग करेगा, जो ग्रेड 12 के लेवल पे है वो ग्रेड 12 की डीक्लटरिंग करेगा, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है वो यूनिवर्सिटी लेवल की डीक्लटरिंग करेगा. Because it is going to be subjective to each individual who attends the workshop. So only the tools will be same. The aspect of usage will depend from person to person. We will be using meditations, exercises, worksheets, self-realization activities, many other things. Of course, facts, figures, सब कुछ research हम करेंगे उस पे, and उस basis पे हम ये program को create करेंगे. We will be using more than 30 modalities का हाथ पैर सर, किसी का liver आएगा, किसी की kidney आएगी, किसी का heart आएगा, किसी की आँख आएगी. But predominantly, the most common ones are feminism, inner child therapy, shadow therapy, quantum leap, Ho'oponopono, NLP, EFT, body psychotherapy, cognitive behavioral therapy और CBT, mindfulness. ये सबसे popular known वाली है. Unpopular में बहुत सारी और है. ठीक है? So we'll be using a combination of whatever fits in there. ये कोई एक formula नहीं use करने वाला है. Now please understand one thing. इसका मतलब क्या है? अगर हम Ho'oponopono यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसका एक पार्ट यूज करेंगे. We are not learning the
modality or methodology. We are only using it as a tool. If we are using Pelmanism, we are using aspects from Pelmanism. We are not learning what Pelmanism is. If we are using chakra work, we are using some parts of chakra healing. We are not going to work on theories. Theories will be हमारी life कैसे create होती है. Theories will be practically what we are attracting, why we are attracting. We are not here to talk about methods. This is not a theoretical learning program. This is a self-help program for you to help transform your life. Later, all the professionals are free to use the tools and exercises taught for their clients. That is okay. But यहाँ पे cognitive behavioral theory क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, हम ये सब नहीं करने वाले हैं. हम सिर्फ उसके वो एस्पेक्ट्स यूज करेंगे जिससे हमारी जिंदगी चेंज होती है. दिस इज अ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रोग्राम, which means you will be working with me 20 to 20 maximum every day for 6 months. 6 महीने. Every day, ma'am? Every day मतलब हफ्ते में, I told you, twice a live classes only twice a month. Remaining the rest, days? You will be working on yourself. You will have a flow chart. You will have your own processes to do. ये करना है रोज, उसको journal करना है. And every 15 days when we will meet, you will give me your feedback. You will ask your questions. So you will be working on it every day. I'll be supporting you every day. There's complete hand holding. But काम आपको करना है. मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगी, लैंटर्न लेकर खड़ी हो जाऊंगी वहां पे to show you the path ahead. So all the recordings will be available for the next 2 years, because trust me, 2 साल के बाद में जिस स्ट्रगल से आप फंस रहे थे उसको आप क्लियर कर दोगे और कोई और स्ट्रगल आ जाएगी. So 2 years के बाद ये कंटेंट आपके लिए obsolete हो जाएगा for personal growth, and you will move on to other challenge areas. Then we will see what to do. You will have a WhatsApp alumni group as always, which will be there for post workshop support. There is no PDF because there is no theory. सब कुछ प्रैक्टिकली करना है. तो जो भी वर्कशीट्स एंड ऑल होंगी वो क्वेश्चनर्स के फॉर्म में होंगे, पर कोई PDF मैनुअल नहीं है. ये मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ, ये हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. फिर there are only 2 batches, and I don't know if I will repeat this program, because this program is an experimental program created for a particular group of students जो मेरे alumni groups में है, people who have been needing something like this. Each batch will take 20 to 22 maximum. 22 क्रॉस नहीं होगा, ये मेरी अपर लिमिट है. इवनिंग बैच में ऑलरेडी आज 4th registration आ गई, तो नंबर ऑफ सीट्स हैज चेंज फ्रॉम 17 to 16. मॉर्निंग बैच is available, has 20 seats available. 13th of January से दोनों batches simultaneously start होंगे. Any 2 Fridays a month, which I will pick up according to the need of the batch. Batch की need क्या है उसके हिसाब से, and the date will be scheduled a week before. ऐसा नहीं है कि last minute schedule होगा, 1 हफ्ता पहले मैं schedule कर दूंगी. लेकिन क्या होता है, हर बैच ना, किसी बैच को किसी मंथ ज्यादा टाइम चाहिए, किसी बैच को, suppose there is batch 1 might need more time in emotional healing and lesser time in spiritual declutter. So we will pick and choose that timeline. But it will be on Fridays only, 2 Fridays a month, 9 a.m. to 11 a.m. for the morning batch and 7 p.m. to 9 p.m. for the evening batch. ठीक है? Now, please remember, इसमें seats extend नहीं होंगी. And there will be no other orientation for this as of now. I don't plan to do it, very honestly. The energy exchange for this program is 13,750, which is either payable in 1 single installment or 5 installments. 6 महीने का program है. You can pay it in 5 installments of 2,750. All of you are spending a lot on your own personal upkeep, shopping, कपड़े, kitties. 5 महीने अपने लिए निकाल करके 2,750 spend करना ज्यादा नहीं है. It is not even equivalent to your 1 restaurant का bill. So it is up to you whether you prioritize or not. You can pay again through all the normal procedures, Google Pay, Paytm, UPI, or bank transfer. That is your choice. Now, once again, guys, only 2 batches, and I'm not sure if I will do another batch of this, because ये batch कैसा जाएगा? What will be the creation that we will take out of this batch? How will it help? उसके basis पे आगे ये program continue होगा कि नहीं होगा? I will decide that based on
the results of this batch for all my entire student group. This is first come first serve. Last minute मेरे पास आके बोलो कि मेरा सीट बुक कर लो, अगर मेरी सीट फुल है मैं नहीं बुक करूंगी, बिकॉज इस प्रोग्राम में मुझे आपको बहुत सपोर्ट देनी पड़ेगी और मेरे पास एक लिमिटेड टाइम पे, I will not exceed it. 16 seats are left in evening batch, 20 seats are left for the morning batch. Those who are interested, please make your choices, make your decisions and register. Anjali from Transcending Beliefs will reach out to any of you if you have a query. She will be calling you up next week, perhaps थोड़े दिनों में, आप कल से जब भी उसके पास टाइम होगा, as per her schedule. But so she will clear any doubts or questions that you have. In case वो आपके doubts or question clear नहीं कर पाएगी, then she will connect you with me in case needed. Now, those who want to register for this program will have to pay the first installment now to book their seats. उसके बाद में you will start paying from January. Registration will close the minute the batch is full. There will be no third batch. मेरे पास नहीं है time because January में Akashic Records is also starting, Theta is also starting. So I have no time. Afternoon batch नहीं होने वाला है इसका. So choose your path, guys, and do what is needed. You are the only one who knows what you need and what you don't need. The choice is yours. Now, any questions? Please ask questions if you have anything. Shweta ji, 1 second. Na? Hanji. Yeah, at present I cannot pay. So, but afterwards I want to pay. So if the seats are available, you can pay for it and register at the time. Then it is possible. Okay. वो कोई problem नहीं है. Okay. Even I have So- the same. So the question. same thing goes for you. If you can't Yeah. take the payment now, as long as seats are available, you can Yeah. make the payment. Okay, thank you. Thank you. Vandana ji, I will share the payment details in the WhatsApp group. जो De-Clutter का group है, मैं उसमें अभी I'll share all the details with you. Any questions regarding the program? Any questions regarding payments को छोड़ दो. Any questions regarding the program? Because payment से related questions अंजलि आपके लिए manage कर सकती है. But मेरा दूसरा session चालू हो जाएगा. So any questions in relationship with the workshop, please ask that. This will be on Zoom. It's a live workshop, online. पूरा online है, इसमें offline कुछ नहीं है. It is about more meditation, like? No. Meditation will be only one of the tools that we will use. It will be a lot on, बहुत सारे questionnaires हैं, activities होंगे, exercises होंगे जो आपको अपने end पे करने होंगे. अभी उसका पूरा persona या पूरा क्या बनेगा मुझे भी नहीं पता. I am still creating it. Every day I create something, कुछ नया निकल के आ जाता है. So there'll be tools of how to identify, there'll be tools of realization, then उस realization को action में कैसे डाल करके heal करना है. All of it will come. So when you have to identify a problem, questionnaires, worksheets are very good. To realize the core problem somewhere or the other, self-realization comes from a space of meditation or activities which connect you with the subconscious brain directly. Then when it comes to action, उसको heal कैसे करना है, उस problem को ठीक कैसे करना है, अपनी जिंदगी से वो clutter को निकालना कैसे है, then वो action path अलग है. तो ये 3 अलग-अलग perspective पे हर path create होगा. तो अभी ये कितना वाइड बनेगा, इसमें एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, वो तो आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को भी नहीं पता है. बिकॉज सी अंडरस्टैंड वन थिंग, अ लॉट ऑफ दिस विल डिपेंड ऑन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर नीड. सिंस इट्स अ पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम फॉर ओनली 22 पीपल इन अ बैच, एक आउटलाइन बनेगी, लेकिन उस फ्रेमवर्क में एग्जैक्ट क्या फिट होगा वो उस ग्रुप के स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी नीड और उनके क्लटर पे डिपेंड करेगा, मेरे ऊपर नहीं करेगा. So a lot of things will only take exact shape when the program starts and the batches are full. Okay. Any other question? Thank you. You're welcome. Any other question? I hope this session has added value to your life, because this was very different from what we normally end up doing. Yeah, it was totally different, and we could gain so much from this, ma'am. I mean, it's totally different from all your orientations, all your subjects, and it's quite impressive. Like it keeps us intrigued what we may learn.
Thank you, It Doctor. started Even for decluttering. the course, I was thinking whether I should join or not, but thankfully I like attended this work like orientation, and I have a clear mind where I'm going, so I'm definitely gonna join. Thank you, Vandana. Thank you. It started decluttering. Great. I'm so happy. How I'm does so it get any better than this? yes. How does it get better than this? So guys, thank you all for joining in. कोई भी problem होगी, please reach out to Anjali, because अभी मेरा workshop schedule थोड़ा heavy है, so I might not be able to connect with each and every person. For anybody who needs personal hand holding or support, जैसे Dr. Rupa, कभी फंस जाओ, तो message or leave a voice note. Ma'am, will we get a recording of this session? This Yes, it is orientation? already on you live on YouTube. YouTube से आप लोग ले सकते हो. I'll share the link also in a while. And if you think anybody else can benefit from it, please share this recording with them as well. Because whether they join the program or not, जो हमने पहले discuss किया can be a path of self-realization for them. So it is always from the perspective of knowledge and identifying where we are getting stuck in our lives. This might be a good space for them to start. So thank you all for being here, and take care and stay safe, and see you all in whichever workshop I have to see you all in, and I'll be. Thank you, Thank you Shweta, so for the much. lovely workshop. Thank you. Thank you. That's real great fun. Thank you. It was Thank you. lovely. Thank you so Love much. you too. Thank you, everybody.